going again over the straight from the notes. सही है? अच्छा ये था AVD. Let me just see हमारे topics और क्या हमने पढ़े थे, so I can take a look. हाँ नंबर दो. So, हाँ so I wanted to clear a confusion. हाँ Basically, there's a cloud model that is public, private, or hybrid. हाँ And we have another model that is shared responsibility, जिसमें SAS, IAS, and PAS आता है. सही है. So, what is consumption based models? आपने इसको क्विज में पूछा हुआ था. I have seen that question. Consumption. I know what is consumption based models, but what are consumption based models? उसके कौन से नाम है? I haven't read about that. या अगर आप मैं पावर पॉइंट खोल के दिखाता हूँ, so we have all can see the same thing. Okay, एक सेकेंड. देखो ये स्लाइड थी स्ट्रेट. सही है. ये था कंजम्पशन बेस्ड मॉडल. यू कैन गो ओवर हियर. कंजम्पशन बेस्ड मॉडल. Let me see. Again, straight. I just copy pasted right this thing straight from over there. और उसके अंदर it's all about capex and opex. सही है. Okay. I literally just copy pasted this thing. और ये मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, ये देखो हर स्लाइड के नीचे नोट्स हैं. You can take the question, search it in the slides, and go to this link. It will explain you everything. और ये वाली स्लाइड थी basically consumption based model. And it's not about I and pass, right? Because it's about buying something upfront versus going to cloud. And cloud gives you OPEX based model, right? And OPEX के अंदर both IS and PaaS and everything cloud offers, it comes, right? Yeah. Right. So that was the idea. But again, it's straight explained over here. And I mean, we discussed this. It's about capex. Yes, we already have. Yes. But idea is जो मैं बार बार कह रहा हूँ इन चीज़ों के अंदर, it gives you जो हमने किया है, it puts these things together. So yeah, in a little bit more precise form and specific things. सही है. To be very clear on these things. ये क्या चीज़ें सही है. वो ये capex है, opex है, और देखो अब cloud computing fall under opex. So it's not about IS PaaS. All cloud computing falls under OPEX. Okay, because it's consumption based. Yeah. So you don't pay for the infrastructure on these things. You know what the basic stuff is, right? And these are some of the benefits, right? Yes, sir. And critical points, as you know, stop paying whenever you don't need. You don't have to worry about it. Okay? And you can get extra stuff when you need it. So. फिर आपकी प्राइसिंग मॉडल्स आ जाते हैं. वेरियस डिफरेंट थिंग, पे एज यू गो है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स एज वेल एंड ऑल दैट. And you rent them and all that. Yes, sir. Got it. I mean, I think somebody asked me, मैंने कहा था, again, I want you guys to, it's simply, I mean, literally just search. If you just search on it, you will get the answer. सही है. तो मेरे ज़हन में था, पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूं, फिर मैंने कहा I would like you guys, so you can read also, right? Which is the, you know, same thing also. इसके अंदर ये सवाल था जो मेरा क्विज के अंदर, सही है, about ये देखो आप जाओ इसके अंदर सिक्योरिटी गवर्नेंस, ये मेरा सवाल था एक, सही है. आप पिक लिटरली फ्रॉम हेयर, यू गो इनटू दिस वन, आप इसके अंदर जाओ and you can do this one, right? I copy pasted this one. This was straight question, सही है. तो ये चीज़ें जो हैं, रीडिंग दीज थिंग्स, इसको जाके मे बी प्रिंट इट आउट, इसको कर लिया करो, हाईलाइट कर लिया करो मेन पॉइंट्स, राइट? एंड अगेन एक और चीज़ मैं बताऊँ एग्जाम्स के अंदर, आई डोंट वांट पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स. आई एम नॉट लुकिंग फॉर अमाउंट ऑफ कंटेंट. आप मुझे मेन पॉइंट इसमें से लेके, सही है. अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने, क्लाउड फीचर सपोर्ट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस. इसके अंदर टेम्पलेट्स हैं,
आप इंश्योर करते हैं रिसोर्सेज बनाओ that meet corporate standards and government regulations. Put one small point. Templates help you deploy this one. So yeah, what else is there? You can update all resources to new standards as standards change. So yeah. Also, it flags any resources out of compliance. ये मैंने Azure policy का बताया था. उन्होंने अभी तक कहा नहीं Azure policy क्यों cover नहीं की उन्होंने Azure policy. But this is what Azure policy is. So yeah, you can do this thing. So up those points, very briefly, you can put them, and that is more than sufficient. I'm not looking for paragraphs. I'm looking for your understanding. Don't try to write too much stuff. Spend minimum possible time. Show your understanding. That's all there is. ये लेके इनको बेशक प्रिंट कर लिया करो, if possible. Otherwise, इनको notes बना लिया करो इसके. सही है? So you get to very specifics of these things, right? Instead of putting generic stuff, right? वो कह रहे जी cloud providers are typically well suited to handle things like DDoS. I mean, they're giving you some very nice specific points. हमने discuss की कई चीजें, but यहाँ पे just get the points, right? You can put them nicely. क्योंकि हर एक को different तरीका होता है notes बनाने का, सही है? So it becomes much easier. इसी तरह ये manageability है, all those points, सही है? ये हर दो पॉइंट्स के इन्होंने बनाए हुए हैं. ये देखो मैनेजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एवरीथिंग इज देयर. I will stop this one. अब ये जो मैंने किया है वो मेरा सेशन अब डिस्कनेक्ट हो जाएगा. दिस इज वेरी नाइस वेबसाइट. ये मैं आई विल स्पेंड सम टाइम. दिस इज व्हाट वी यूज टू गिव प्राइसिंग टू कस्टमर्स. और कस्टमर भी जब कोई चीज़ अपनी करते हैं ना क्लाउड के ऊपर, दे कम ओवर हियर एंड फाइंड आउट व्हाट द प्राइसेस, डेटाबेस ही क्या है, एवरीथिंग इज दिस हाउ दे गेट प्राइसेस. These are public pricing. They get some discount, 10-15% sometimes depending on their situation. But this is pretty much will give you what you will pay. So yeah. Sir, virtual desktop charge you based on your active activity. कि जब तक आप एक्टिव हैं, अभी you are logged in और अभी आपने से बंद किया, so it was charging जब तक आपका CPU यूज हो रहा था. The virtual machine actually basically ना, क्योंकि इसमें तो रन तो वही हो रही है eventually. Good. So what will happen? What happened? अब मैं I want you to think about the answer. Virtual machine को क्या हुआ अगर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया उसे? But it's still reserved. And but हाँ, but लेकिन स्टोरेज उसकी स्टेट कुछ मेंटेन कर रहा है, स्टोरेज फिलहाल यूज हो रही होगी, बट नॉट द कंप्यूटेशन एक्चुअली. नहीं, होल्ड ऑन, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. मैंने वर्चुअल मशीन से डिस्कनेक्ट किया, सही है? यस. व्हाट हैपेंड टू द वर्चुअल मशीन? शट डाउन होगी फॉर द मोमेंट. इट कैन नॉट बी. आई मीन आई डिडंट शट डाउन द वर्चुअल मशीन. I just logged out from the session. I did not even log out. I disconnected the session. Disconnected. Yes. जो चीजें चल रही थी ना मेरी, मैंने दिखाया वो वहीं पे रहेंगी, वो वहीं पे चल रही हैं सारी. वो देख नहीं रहे. जी. दूसरा यूजर जो डिस्कनेक्ट हुआ था, he was logged in but disconnected. Yes. And everything was running under him. सही है? So when you disconnect, it has nothing to do with VM running. Understand this very basic thing. Okay. VM is still running and I'm still paying Yes. for VM. और AVD के अंदर हमने कहा था SaaS की कॉस्ट है, SaaS और IS component. ये IS component है which I'm still paying for it. I did not shut down the VM and VM should not be shut down by any users. If you think about it logically, users should not have access to even shut down the VM because other people are logged. Yeah, other people have different sessions जो कि उस VM को simultaneously use कर रहे हैं. Okay. Exactly. So yeah, so I'm still paying for that VM. So yeah. So ये IS की जिसकी जो cost है, that is the cost of the session host running, the VMs running, and you continue to pay unless you shut them down. Okay. अच्छा, Azure फंक्शन हमने पहले पढ़े थे. मेरा ख्याल एक दो लड़कों ने सवाल भी पूछे थे Azure फंक्शंस के ऊपर. Azure फंक्शन जो है, ये देखो क्या कह रहा है, कंजम्पशन. और ये देख लो, वो कहता है मैंने मेमोरी कितनी देनी है. वो कह रहा है फर्स्ट आर फ्री. कितना? 400,000 GB ऑफ एग्जीक्यूशन एंड 1 million एग्जीक्यूशन. तो ये
4 million, yeah, I think 4 terabyte कह रहा है, 4 terabyte कह रहा है, 400 terabyte of execution. I don't know what this thing means. And 1 million execution are free. देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कह रहे हैं कि 1 million executions, this is called serverless compute. I mean this is serverless computing. सही है, even तो compute है, वो कह रहा है आप इतनी दफ़ा invoke करोगे ना इसको तो I'll give you this much free, उसके बाद I'll start charging. फिर वो कह रहा है कि आपने मेमोरी कितनी चाहिए इसको, सही है, कितनी एलोकेट करूं, और आपका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, सही है, एग्जीक्यूशन टाइम कितना है आपका मिली सेकेंड्स के अंदर इस फंक्शन का, सही है, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट यू आर गिविंग द कंप्यूट, सही है. अब मैं कहूँ एग्जीक्यूशन पर मतलब से आई से 100 कुछ नहीं है, 1000 नहीं है, भी नहीं है. अब मेरी कॉस्ट आई है, सही है, कितनी 10 मिलियन, बिकॉज उसने कहा था 1 मिलियन आर फ्री यहाँ पे. बट इफ आई स्टार्ट इंक्रीजिंग दिस वन, वो देखो प्राइस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, सही है, बिकॉज आई एम गिविंग एक्स्ट्रा कंप्यूट. देखो कॉस्ट कितनी ऊपर गई. अगर मेरा फंक्शन इज लॉन्ग रनिंग और डूइंग समथिंग हैवी कंप्यूट दैट रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम टू फिनिश, नाउ द कॉस्ट इज गोइंग अप, सही है, स्टिल नॉट टू मच अप, बट यू कैन सी, राइट. दिस हाउ प्राइसिंग हैपन्स इन अ सर्वलर. उन्होंने ट्रांजैक्शन के ऊपर किया हुआ है, एग्जीक्यूशन के ऊपर किया हुआ है, और फिर उन्होंने बाउंड किया हुआ है प्राइसिंग को कि आपने कितनी देर तक एक फंक्शन एग्जीक्यूट होएगा. तो दीज आर थिंग्स, राइट, बेस्ड ऑन दीज मेट्रिक्स दिस इज हाउ यू मेक द प्राइसिंग. दिस इज हाउ सर्वरलेस कंप्यूट वर्क्स, सही है, एज अपोज टू. अब इसके अंदर एक प्रीमियम ऑप्शन भी थी. लेट्स सी व्हाट प्रीमियम इज. अब प्रीमियम कह रहा है कि यू कैन असाइन कंप्यूट. भाई कोई कहता है जी मेरी इट्स मोर फीजेबल फॉर मी टू असाइन द कंप्यूट, तो फंक्शंस को उन्होंने कंप्यूट ऑप्शन दे दिया, सही है. आई नो व्हाट ईपी स्टैंड्स फॉर, भी देख लेते हैं. आई थिंक इलास्टिक समथिंग मे बी, एंड यू कैन से हाउ मेनी इंस्टेंसेस डू यू नीड, राइट. दिस इज स्केलिंग, यू कैन डू द प्राइसिंग ऑफ दैट ऑन ऑल्सो. मैं कहता हूँ ये 250 घंटों के लिए मुझे सब क्या कहते हैं, लेट्स से आवर्स, एंड डेज के लिए मैं कहता हूँ मुझे 10 डेज के लिए मुझे चाहिए होंगे ये, सही है. This is how you do the pricing, right? For these things. फिर उसके ऊपर इसके ऊपर सेविंग प्लान भी देते हैं कि आपने अगर यूज कर रहे हैं, will give you this much savings and all. That's a separate thing. We'll discuss this later on. ठीक है? But this is how you work with these things, and they give you multiple option. वो कहता है आप serverless में चले जाओ. It's not really serverless, right? Because serverless, ये अगर आप जाओगे ना functions की वीडियो के ऊपर, it is there. It's a 5 मिनट की वीडियो. Make sure you watch it, right? सो सर्वरलेस के ऊपर जिसका क्लास में मैंने कहा था देयर इज अ कंप्यूट, बट क्या कहते हैं यहाँ पे वो दे आर चार्जिंग यू बाय हाउ यू आर यूजिंग इट, सही है. So sir, basically, serverless में ये है कि we are using server, but जो responsibility है that is handled by service provider. No. Actually, server की है. No. Because it's trigger the functions whenever we need any response. देखो अगेन आई वांट अस टू हैव वेरी क्लियर टर्मिनोलॉजी. ये वाली बात तो हमने पैस के लिए कही थी कि कंप्यूट है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन ऑन द प्रोवाइडर, राइट. यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कंप्यूट है बट वी आर नॉट चार्ज बाय कंप्यूट, राइट. अभी भी रिस्पॉन्स यूज किया है बट वी आर नॉट चार्ज बाय द कंप्यूट, we are charged Okay. for the transaction or the execution, सही है. Yes. Be very clear on this one, okay. So serverless के अंदर we are not charged by the compute, we are charged by the transaction or number of executions, सही है, in serverless computing. मैं दिखाता हूँ इसके अंदर भी. ये शुरू में पहली स्लाइड थी एक्चुअली जिसमें Azure functions थे and I briefly went over it. ये देखो इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसके अंदर, सही है. एक्चुअली बता रहा हूँ, ये देखो कह रहे हैं डजंट इम्प्लाई टू सर्वर बट रादर लेस सर्वर. सर्वरलेस इज इवेंट ड्रिवन, कि जब आपका ये होगा यू विल पे फॉर दैट वन, ओके. यू आर नॉट पेइंग फॉर द कंप्यूट, सही है. तो ये होता है बेसिकली.
वो कह रहा है कि infrastructure behind serverless allows for instant scale to meet elastic demands. Well, elastic, I think EP means elastic something. Elastic, I don't know what P stands for. Yeah. And offers micro billing to pay, right? So read this one. It's telling you, and of course you can go into when you go into this one. इसके अंदर सर हमने व्हेन वी वर बिलिंग वो जो बिलिंग बना रहे थे फॉर द एज्योर फंक्शन हाँ नॉट द प्रीमियम वन, हाँ उसमें जाके हमने देखा था कि व्हेन वी वर इंक्रीजिंग टाइम हाँ ऑफ रनिंग एंड एग्जीक्यूशन, तो बिल उसमें इंक्रीज हो रहा था. सो दैट टाइम इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द आवर रिसोर्सेज ना, कि कौन सी रिसोर्स अटैच्ड है जो उसको कंप्यूट करने में इतना टाइम ले रही है. डजंट इट डिपेंड ऑन दैट, बिकॉज इसकी ऑप्शन हमने कोई सिलेक्ट नहीं की कि कौन से रिसोर्सेज एज इन कोर्स और जो रिस्पॉन्ड करें उस क्यूरी से जब ट्रिगर हो मेरा फंक्शन. It's a very important point. I think the idea is it is ये जो execution time है they're looking from a single CPU perspective. सही है. अब वो चाहे आपको I think and this is what they are probably doing. They are assigning a single core to this one. And on single core they are expecting कि जी आपको 2000 millisecond या 2 second लग रहे हैं. सही है. So this is 2 seconds actually, right? This is in milliseconds. So this is 2 second execution time. So this is what it seems like, और maybe the details होंगी कहीं ना कहीं in details in Azure functions इसकी billing के अंदर, but it seems like it's a single core model क्योंकि it doesn't make sense कि 2 सेकंड लगने अगर मुझे 2 कोर है वो 1 सेकंड में काम हो जाएगा. सही है. यस एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग कि अगर मेरे पास ज्यादा कोर है तो वो एग्जीक्यूशन टाइम उसका उतना ही कम हो जाएगा. सो हाउ कैन आई फिक्स दैट, क्योंकि इसमें सिर्फ चार्ज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द टाइमिंग No. Take a look. They are charging you timing from a core perspective. अब फ्रॉम अ सिंगल कोर. अब अगर 2 कोर भी असाइन करते हैं दोनों ने 1 1 सेकंड लिया मेरी बिलिंग तो वापस सेम हो जाएगी ना. ओके ओके कॉस्ट ओके. नहीं चेंज होगी. वो 4 कोर दे दे मुझे बेशक. तो वो क्या यस. है इट डजेंट मैटर मेरी कॉस्ट विल रिमेन सेम क्योंकि वही काम मेरा डिवाइड हो गया कोर के ऊपर. तो आई मीन जल्दी हो जाएगा बट इट विल कॉस्ट मी सेम. सो आई थिंक टू सिंप्लीफाई थिंग्स दिस इज व्हाट दे हैव डन अंडरनीथ. आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग अंडरनीथ आर्किटेक्चर क्या है इसका. सही है. कि श्योर. कंप्यूटर प्रो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं और वो आई मीन आई एम एक्सपेक्टिंग कि चूंकि वर्चुअल कोर्स हैं सारी की सारी आई एम एक्सपेक्टिंग कि दे विल प्रोवाइड उसमें अगेन देखो सर्वरलेस के अंदर दे हैव अ बिग ब्लॉक जिसमें सारों के फंक्शंस चल रहे हैं. सही है. क्यों आपको कंप्यूटर तो नहीं मिल रही डायरेक्टली. दैट मीन्स दे आर सिंपली इंश्योरिंग आई थिंक दे आर गिविंग अ सिंगल कोर बिकॉज दे विल नॉट असाइन क्या कहते हैं इसके अंदर लाइक दिस. लेकिन वहाँ पे जब प्रीमियम है यहाँ पे देखो वेरी स्मॉल कंप्यूट इज कॉस्टिंग यू अ लॉट. नहीं हमने इंस्टेंस से ज़्यादा किए हैं. So yes, still one machine, not 2 cores, right? It is costing you quite a bit, right? यस सर. $300. Anyway, and as you scale, so seem like it's a single core is giving you, regardless what they do underneath, ये दो दे दें the cost will be identical. It should not change. ठीक है. ये है इसी का सर्वरलेस कंप्यूटिंग है. ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है. सही है. So take a look at these things. Basically, it's again straightforward stuff. Nothing really special. ये मैं इसलिए again लेके आ गया था. ये हमने पहली स्लाइड के अंदर कवर किया था. So I just want to you guys to go over these things again a little bit. But it's straightforward. सर बाय एनी चांस हम पेपर को ओपन बुक कर सकते हैं? Yeah, no need, right? I mean, otherwise you'll be copy pasting. Anybody can do copy pasting, right? I don't want it. And you should not be doing open book. I mean, it's very straightforward stuff, right? And you have all the answers in front. I mean, you have all the answers, right? या तो मैं फिर उसको see what happens in open book. और हमारे मास्टर्स के तकरीबन सारे एग्जाम्स और ओपन बुक. Then the questions are like this. कि आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर आप आंसर ही नहीं कर सकोगे. सही है. I can give you design questions and make it open book that if you do not understand, books will not help you. So yeah. So this is what happens, right, when something is open book. But not in the beginning like this. क्या कहते हैं? जिस तरह for example, if you go into machine learning,
जो वो है टेंसर फ्लो, जो बड़ी लाइब्रेरी गूगल की, उसका जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है, दैट इज ओपन बुक, राइट? यू कैन गेट एनी हेल्प, but it doesn't help you, right? If you don't know what you're doing, it will not help you. ये एग्जाम है उसका, and there are many other exams which are open book, right? But tensor, it's a very big certification in AI world. ये Google का टेंसर फ्लो है, और उसका this is open book exam, right? But I mean the book doesn't help you. You आपको बल्कि सारी help is online actually. You can search and do all that. वो को उसके लिए देख syntax के लिए, but I mean it will not help you at the time of exam, right? So this is what happens basically. But I can do, if class agrees, we can do maybe later on open book exams. But you will see the difference in the exam questions then, right? So I mean we can discuss this option. नहीं सर, आई थिंक ये जिस This ये is feasible, sir. This is feasible. But right now is all about very basic conceptual stuff, right? And you, हमारा जो Azure का architect exam है ना, which is AZ305, I think. This is one of the hardest exam. ये हमारी requirement है job के ऊपर to do this one. I think it's AZ305. ये designing solutions, right? I mean, unless you know your stuff deep and know what to use where, you will not pass this exam, right? इसके अंदर, I mean, you can bring any book, it will not help you. ऐसे ऐसे सवाल हैं इसके अंदर, right? It's very very tough exam. I mean, for us, ये हमारी वो है, क्या कहते हैं, ये solution जब बनाते हो आप, सही है? And I will give you some very brief, simple one design questions maybe in the final. So yeah, we'll discuss those things. और जो एक असाइनमेंट मैंने इन क्लास रखी है, यू विल सी दोज थिंग्स, लाइक आई विल मेक इट ओपन बुक, दैट असाइनमेंट, सही है? बट इट नॉट, बुक्स विल नॉट हेल्प यू व्हेन यू गो इनटू डिजाइन, सही है? बिकॉज क्वेश्चंस विल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, because you have to put together a design and architecture to put things together, and you need to know your stuff, right? If somebody is at the point where you need to understand what is server, what is serverless, or these things, at that time question will test your understanding whether you will pick the right thing or not, right? Which is ज़हन में होनी चाहिए. मैं एक्चुअली मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में 3 या 4 स्लाइड्स पढ़ाई हैं in 1 hour, right? We went into lot of details. I know it's real world stuff. आप पहली दफ़ा देख रहे हो. I'm going into extreme details also. सही है? ये वाली स्लाइड, I mean understand this one, right? क्योंकि हमारा कंटेनर्स और वर्चुअल मशीन का is very critical, right? To have a proper understanding. क्या containers हैं and virtual machines क्या हैं, and why do we want to move towards containers as well, right? What is the value proposition of these 3 things, right? Because these are solution components. आप जब company में जाओगे, yeah, these are things you will do that, right? So let's do a little bit of containers. सही है?